everyone. Welcome to yet another stream on the Third Man Cricket Show, and it's a very joyous occasion because it is going to be the start of something new. So we already have that dreadful tour to South Africa behind us, and थोड़ा सा मतलब IPL का भी माहौल हो गया था बीच में. So now finally we are back to Indian cricket in about a week's time. So still some time to go, but recently the squad for the limited over series against West Indies was announced. So before we check out the schedule, let me just introduce the panel members for today. We got Rishi here, who is an experienced member already, and Nikhil, who is also slowly becoming an experienced player. So really good to have you both. We also have one more guest in Omkar, but he seems to be running late, so he'll be joining us midway. Anyways, Nitin Modi has already commented. He said, Rishi Dhawan kahan gaya? So yes, we'll be talking about the squad selection in just a moment. So before that, we'll just have a look at the schedule for the India West Indies series. So obviously we got three ODIs and 320Is. So three ODIs, I think it will be a part of the ODI Super League, which will be very crucial for West Indies because they are contending for that top 10 spot. So we got the three ODIs in Ahmedabad, the new stadium, and it is scheduled February 6, 9 and 11, adjusted to be just before the IPL mega auction, and the three T20Is will be played after the mega auction on February 16th, 18th, and 20th. So let us now have a discussion with our panel member first. So starting with you, Nikhil, obviously good to be back on the show, but are you relieved that finally वो South African series जिसके ऊपर हम बार बार बात करते आ रहे, it has finally got over. Now we can look forward to something different against West Indies now. See, yes, it was a horror tour for us. We did not manage to win the after that first series. But to be very honest, मेरे लिए मुझे पता है कि ऐसा टाइम कभी ना कभी आएगा क्योंकि इंडिया इतना जीतते रहा है कि when they'll get that slump तो फिर प्रॉब्लम होगा ही. और इंडियन फैंस का देख के हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं अचानक से कि अरे यार क्या हो गया, क्या गलत हो रहा है, क्या चेंजेस होने चाहिए. बट आई थिंक रोहित शर्मा भी वापस आ गए जो अपने मेन स्किपर है. सो ही इज बैक नाउ, सो गुड टू सी हिम. और अच्छा चल रहा है. और आई गेस राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा का जो कॉम्बो है वो एकदम सही ट्रैक पे लेके जाएगा इंडियन टीम को. नो वरीज. और लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वेस्ट इंडीज सीरीज. और बहुत अच्छे अच्छे नाम आए हैं इंडियन स्क्वाड में भी. सो वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट देम एज वेल. और उनको देखने में भी बहुत मजा आएगा. एग्जैक्टली बहुत मजा जरूर आएगा. तो ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में देखा जाए तो लॉट्स ऑफ कमेंट्स ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग इन. सो अंकित सेड दैट हैप्पी फॉर दीपक हुडा बट ही मे फाइंड टफ to get a game. We'll slowly get into discussion. Jagan is a big fan of Rishi, so he's saying nice to see you, Rishi. So Rishi, obviously good to see you once again. So Rishi, your thoughts on this series? Like, what can as fans, what can we look forward to from this series? Because whenever मतलब जब भी सोशल मीडिया पे जाते हैं तो लोग अभी भी फिलहाल अपसेट है अबाउट द एंटायर साउथ अफ्रीकन सीरीज. वो लोग बोल रहे हैं कि अरे यार बस वेस्ट इंडीज है, कुछ नहीं मजा आएगा. सो as a fan, how will you convince them that this series is also important for Team India? Hi Sanchit, hi Nikhil. Hope you both are good. And hi Jagan. I mean, he is one of my friends, so hope to see you here. And yeah, so I mean, I'm really excited for this series. I have seen two or three. I mean, we all have seen two or three good new names in the series. I mean. There are two or three things which are disappointing I felt from the South African series point of view, from the team selection point of view, which we actually thought that those people might be might be able to continue in this series, but others have been preferred, I feel, right now. Maybe because of what they'll be offering in these conditions. Maybe because of the conditions are different, so maybe that's why they have preferred to choose more of spinners or spinning all-rounders over pace fast bowling all-rounders or something. So I felt that way. One was the reason. And yeah, that's what I feel. Exactly. And already मतलब comment section में सौरभ देसाई ने कहा है कि really excited to see रोहित शर्मा lead the Indian team, full faith in him. So मतलब captaincy के बारे में बहुत discussion हुआ था in the last few days when KL was captaining, but now मतलब all the majority of the Indian fans will be slightly relieved कि the main man has finally returned. So really it will be an important series.
तो जैसे ऑलरेडी स्क्वाड के बारे में डिस्कस हो रहा है, लेट अस नाउ have a look at the ODI squad firstly, then we'll talk about T20s Yeah. later on. So here is the ODI squad which is selected for the West Indies series. So obviously Rohit Sharma coming back as the captain. KL Rahul is going to be the vice captain. Lots of new names. Obviously, we can see Washington Sundar coming back into the squad after recovering from COVID. Ravi Bishnoi, I think this is where I really like this squad selection. So, मैंने just recently tweet भी किया था about the prospect of seeing Ravi Bishnoi amongst the squad. So I'm happy that against West Indies he's got an opportunity. Prasidh Krishna retains his place, and also Aves Khan is also going to be a topic to discuss upon. So obviously, guys, really good names you can see on the squad sheet, and Deepak Huda already जिसके बारे में अंकित ने comment में कहा है. So let us now dive Yes. down into the discussion of the ODI squad first of all. So Nikhil, obviously you had a look at the ODI squad. Which of the name do you feel is what which actually makes you really happy कि finally हाँ यार ये चाहिए था squad में, and good to see him finally there. First of all, very good to see Surya Kumar Yadav and Shreyas Iyer continue in the squad because बहुत बार देखा है हमने कि किसी भी यंग प्लेयर को बलि का बकरा बना देते. Hmm. आई एम रियली हैप्पी टू सी कुलदीप यादव बैक क्योंकि उनको आई गेस वो एक पुश या फिर जो एक बैकिंग मिलना चाहिए ना, वो आई गेस ही इज डिजर्व दैट बैकिंग एंड इज नॉट गॉट दैट बैकिंग, नॉट फ्रॉम बीसीसीआई और नॉट फ्रॉम द इंडियन टीम नॉर फ्रॉम केकेआर. उनको मुझे अभी भी याद आता है कि 5 चेन्नई में गेम थे उनके 2021 में और उनको एक गेम पे भी फीचर नहीं किया था जहां पे हरभजन सिंह को तक खिलाया गया पर Kuldeep Yadav wasn't played. So I guess he deserves this backing. He's worked really hard, man. Like I've seen videos of him working in the NCA, working on his fitness, working on his batting. So it will be really interesting if we can somehow find that mix and find Kolcha together because they were our key to that success we achieved right from 2017 post the Ashwin Jadeja combo. That's where we actually got our success. We got those plenty of wickets in the middle overs. So yes, very happy to see Ravi Bishnoi and Deepak Hooda. But I will be really, really interested to see Kuldeep and Chahal back together as a team, as the duo which was considered to be unstoppable at some point in time. So very excited, and I really hope that Ruturaj Gaikwad gets a game. Far too long he's been sitting on the bench. So Ruturaj Gaikwad has to get a game this series if possible. I won't say if possible because if we lose the first one, then you will say it's a do or die. But I think we should keep the results aside and look for the future, invest in the future. Exactly, and it's a good point that you made. मतलब result कुछ भी हो, but we should have a clear plan कि किसको try करना है, किसको try नहीं करना है. So obviously ऋषि, मतलब comment section में देखा जाए तो जब कुलचा के बारे में बात हो रही थी, and when we had a look at the squad discussion, Abhinav and Prashant also mentioned that Jadeja के बारे में. So there was an update which was given by BCCI that Jadeja is Yes. still undergoing his final stage of recovery. So he will be not be available for the West Indies tour. Hopefully, we will see him for the Sri Lanka test just before the IPL. I mean, with Ashwin not being there since he's also out of the action for Yes. 2 months, we hope to see Jadeja there. So coming to you, Rishi. So obviously Kulcha के बारे में बहुत ही questions मतलब comments देखे, and even Abhinav said कि hope Kuldeep goes to MI and plays under Rohit rather than a team that like KKR treating a Chinaman like this. So I want to know from you, obviously Rishi, because you represented KKR on our panel Yeah. for during the IPL. So I want to Yes. know, like, how big of a series will this be for Kuldeep Yadav, and do you feel that is he going to get an opportunity in this West Indies series? Because already, मतलब Bio Boy का कहना है कि Bishnoi will play T20 World Cup, so he's implying that Bishnoi will start ahead of Kuldeep in this series. So how will you look at this from Kuldeep's point of view? I think on this comment which Boy has made, I feel that it's quite early for Bishnoi. I feel because even Yuzi Chahal is in the squad right now, so only Bishnoi will play when Yuzi Chahal is out of contention, and I don't think that is going to happen in this series. Maybe 2 or 3 series later on, because I my expectations from Yuzi Chahal in the South African series was he didn't meet those expectations which I had, at least.
I don't know about the Indian team, but at least what I expected from him, that he wasn't up to the mark. So maybe there's a chance that after Sri Lanka, after this series, he might get a chance in the Sri Lankan series, maybe. But I think Kuldeep Yadav, talking about that Kuldeep Yadav issue, I feel that he'll be given a chance to start, and I know he'll do well. Even as I came as a KKR fan, I used to tell that I want Kuldeep Yadav badly to start in the KKR playing 11, but that never happened, at least in the last 2 years. So that was a little sad part, and I agree with what Abhinav says here, that Kuldeep should go to MI and play under the captain like Rohit, because Rohit is a captain who can get things out from a player. How good that player is, how bad that player is, only defines when a captain also can get those things out from from the player. So I feel Kuldeep Yadav, he's in the right hands right now, and maybe in the future as well if he goes to MI. So hope to see something practically well from both Kuldeep and Chahal, because I feel that they were never bad with the ball. The only thing was that they were never able to contribute with the bat. So I'm a little worried about that even right now. But if that batting is sorted out, then I don't feel there is any problem to go on with them. एग्जैक्टली एंड मतलब कमेंट्स में भी देखा जाए तो बहुत लोग सिलेक्शन के बारे में फिर से बोल रहे हैं कि व्हाई ही इज देयर व्हाई इज नॉट देयर. तो एज वी सेड कि मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग वन गेस्ट बट नाउ वी गॉट टू गेस्ट ऑन आवर पैनल. सो जस्ट लाइक द बीसीसीआई सिलेक्शन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, पता ही नहीं चलता कि कौन फाइनल स्क्वाड में आएगा, वैसे ही पता ही नहीं चल रहा था कौन पैनल पे आएगा. सो वी गॉट रौनक सर एंड ओमकार हियर. सो मतलब ऑब्वियसली ओमकार तो रहना ही चाहिए था बिकॉज मुंबई इंडियंस का नाम मेंशन हुआ था. सो इट्स लाइक अ सीक्रेट वर्ड, मुंबई इंडियंस बोला तो ओमकार आ जाते हैं. सो रियली गुड टू हैव यू बोथ हियर. सो स्टार्टिंग विथ यू रौनक सर, throwing away a spin bowling option right in front of you. So Pratisha here is making a very cheeky comment here about what happened to Mystery and extra pace spinner. So if I'm not wrong, she's referring to Yeah, Varun Chakravarti and Rahul Shah. So Rahul I want Chahal. to ask your Yeah. thought. I want to ask your thoughts, रौनक, कि मतलब what is this chopping and changes? मतलब एक को चांस दे रहे हैं, एक सीरीज दे रहे हैं, then उसके बाद they are just removing and bringing someone else. So what is the logic behind this selection? Because already अंकित ने भी ये कहा है कि ऋतुराज got dropped from T20s, Venki got dropped from ODIs. That's the problem with BCCI. So I want to know your thoughts, the logic behind the selection criteria. देखिए, जो सिलेक्शन पहले हुई थी उसका कोई सेंस नहीं बनता था, तो अभी जो सिलेक्शन हो रही है उसका कुछ सेंस बना सकते हैं. तो अगर सेंस बनाना चाहें तो मेरे मेरे हिसाब से ये जो सिलेक्शन अभी फिलहाल हुई है, ये पहले सिलेक्शन होनी चाहिए थी. रवि बिश्नोई को मौका मिलना चाहिए था, वो उभरते सितारे हैं और जिनका फॉर्म अच्छा चल रहा था जिस फॉर्मेट में, उनको थोड़ी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए. ऋतुराज गायकवाड़ का ओडीआई फॉर्मेट में यानी लिस्ट ए फॉर्मेट में काफी अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो उनको लिस्ट ए में यानी कि ओडीआई में पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए और उनको खिलाना चाहिए प्लेइंग 11 में, आई बिलीव. तो और रवि बिश्नोई का काफी अच्छे टाइम से परफॉर्मेंस चल रहा है T20s में भी और लिमिटेड ओवर्स, सॉरी, लिस्ट ए में भी. तो उन दोनों में उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए था. मेरा ये मानना था कि उनको पहले आना चाहिए था, तो 2-3 सीरीज पहले आना चाहिए था. और जहां तक प्रतीक्षा ने क्या नाम, प्रतीक्षा ही नाम था शायद, मैं भूल गया ऊपर से, जो भी प्रतीक्षा, हाँ, जो वो बोल रही हैं, पता नहीं लड़का है लड़की है, समझ में नहीं आ रहा नाम से, बट जो वो बोल रही हैं मिस्ट्री और एक्स्ट्रा पेस स्पिनर्स, तो बीसीसीआई हमेशा ये उंगली डालता है कि कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते वो, कि बैकिंग नहीं कर पाते जो सिलेक्शन करते हैं टीम सिलेक्शन की. तो आई बिलीव वहां पे गलती पहले की थी, अभी उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो और ज्यादा बड़ी गलती लग रही है. ज्यादा बड़ी गलती लगे, मतलब दैट इज द प्रॉब्लम विद बीसीसीआई एंड आवर सिलेक्शन. तो नितिन मोदी, आप जितना मतलब इवन एन ऑप्टिमिस्टिक इंडियन फैन विल नॉट थिंक कि मतलब अभी तक बेस्ट 11 फाइंड आउट, बेस्ट 15 फाइंड आउट करेंगे. वर्ल्ड कप के 5 दिन पहले एक्सपेक्ट द बेस्ट 15 टू बी फाउंड आउट, एंड फिर से मतलब कोई आगे पीछे आएगा. मतलब ये एक्सपीरियंस है, हम कह रहे हैं. सो होपफुली दिस डजंट हैपन, मतलब होपफुली वी फिगर इट आउट वेरी सून. तो ओमकार, रियली गुड टू हैव यू एज वेल. तो सौरभ देसाई यहाँ पे कह रहे हैं good to see an effort being put to find a replacement for Hardik, unlike the previous regime hoping against hope. So ओमकार, आपका क्या कहना है, ये जो नंबर 6 का जो ऑलराउंडर स्पॉट के बारे में डिस्कशन है, तो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट अभी मतलब वेंकटेश अय्यर गॉट ड्रॉप फ्रॉम द ODIs. So I want to know your thoughts on this number 6 role, the all-rounder role, and where do you stand on it?
मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक को रिप्लेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि द थिंग इज जो भी रिप्लेसमेंट आएगा ही नीड टू फिनिश वेल एंड ही हैज टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस. वेंकटेश अय्यर आई गेस नंबर 4 और नंबर 5 पे खेल रहे थे फॉर मध्य प्रदेश, if I'm not wrong, in the Syed Mushtaq Ali Trophy and also in the Vijay Hazare. तो probably मुझे ऐसा लगता है कि आप एक प्लेयर जिन्होंने हाफ आईपीएल सीजन अच्छा खेला और एक रणजी सीजन अच्छा खेला, उनको आपने तुरंत ऐसे मौका दे दिया एंड आपने उनको ज्यादा बैटिंग का चांस नहीं मिला इन द साउथ अफ्रीकन सीरीज. बट अगर न्यूजीलैंड सीरीज की मैं बात करूँ तो वहां पे उन्होंने सिर्फ एक मैच में बॉलिंग करी, और जहाँ पे उनको एक चांस मिला था, ही जस्ट थ्रू अवे हिज विकेट. लाइक इन द फर्स्ट मैच इट वाज लाइक पहले बॉल पे बाउंड्री मारा एंड सम फैंसी शॉट्स खेलने गए एंड देन अपना विकेट फेंका, जबकि सिर्फ 4 रन चाहिए थे. एंड प्रोबेबली द थिंग इज कि तभी सुनील गावस्कर ने ये कहा था कि व्हाई डू यू वांट टू प्ले फैंसी शॉट्स व्हेन यू कैन प्ले इट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ग्राउंडेड शॉट वेयर यू कैन गेट 2 runs प्रोबेबली, तो यू कैन ease the score and keep the score line moving as well. तो ये थोड़ा सा इशू है, बट स्टिल अगर उसको बैक करना है तो प्रोबेबली दे विल सी इन द आईपीएल एज वेल. एंड T20s में लिया है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, so probably we'll see how it goes because T20 वर्ल्ड कप पहले आ रहा है and ODI वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर है. So let's see what happens. The main thing is that he should be backed properly. And उनका ऐसा है कि ऐसा अभी एक प्लेयर को फिनिशिंग का रोल दे रहे हैं, तो उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि I want to play at such a preferred position. It's not like that. If you want to represent your country, you should be ready to bat at any position. Ruturaj Gaikwad, the opener, is saying that I am ready to play the role of a finisher, but I want to represent my country. So that's the dedication and passion you show towards playing cricket or any sport for your country. एग्जैक्टली मतलब दिस इज व्हाट यू कॉल, मतलब वर्सेटाइल प्लेयर इंडिया को बहुत जरूरत है. सो इफ ऋतुराज इज रेडी टू प्ले एज अ फिनिशर, इज ऑल ओपन टू डू दैट. सो बिफोर यू मूव टू निखिल एंड ऋषि हियर, तो कमेंट्स ले लेते थोड़े से. तो ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ कमेंट्स. तो बायो बॉय ने ये भी कहा था कि जयंत यादव ने क्या किया. तो आई थिंक रौनक ने भी perfectly summed up the entire logic behind the BCCI selection. So Abhyuday is back. Really good to see you, Abhyuday. So he's mentioning a good point about India in ICC tournaments. He's saying that it is top heavy. So whenever we lose, it is because of a top order collapse. So we need to ensure a middle order core which is fixed. So this is the perfect point which I really want to talk about, guys. So he's saying fix Rahul at 4, Sky 5, Pant 6 on flat tracks in India. So middle order के बारे में अगर मतलब middle order is the only thing that needs fixing. Let's be fair. So before you answer this question, Nikhil and Rishi, or anyone if you guys can chip in, let us have a look at the squad once again, so we know exactly who are our candidates for that middle order spot. So obviously ODI squad ही दिखा देते because आधे से ज़्यादा players are same. So you can see KL Rahul is there. Deepak Hooda is also, I think, a middle order player. I'm not sure he will be batting at number 6 or not. Shreyas Iyer is there. So lots of good candidates here. So coming to you, Nikhil, obviously, what are your thoughts on India's middle order moves? Like, why is it happening? मतलब not just ODI, not just T20, but even Test में middle order की वजह से we are losing the game. So what can be a possible solution for that? I guess everyone knows this answer, and Ronak sir very rightly mentioned in one show that we have a lot of questions, but we are not answering. We are not trying to answer that. So that is the main point. You're not giving people opportunities. You're not giving them long runs. You're switching them continuously. You're looking for the matchups, but not fixating one position. Rishabh Pant was pushed at 4, but you ideally want to see someone like a Shreyas Iyer to get back his spot. Uh, am I audible? Yes. चलेगा, no Yes. worries. Okay. You ideally want to see Shreyas Iyer get a spot at 4 and showcase his skills because he has done so well at 4. But just because of the left and right hand matchup, you go for Rishabh Pant. So I guess these things need to stop. If you want to experiment, then have the courage to rest Virat Kohli, have the courage to rest Shikhar Dhawan. And if you don't have that courage, then don't mess up with the batting order. Go as per go. एज पर द ऑर्डर. और आप अगर आपको अगर देखा जाए तो हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड T20 में यूज कर सकते हैं क्योंकि फील्ड पोजीशंस और ये सब होता है. बट ODI में मुझे नहीं लगता कि इतना
सॉरी, इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। श्रेयस अय्यर भी उतने ही अच्छे खिलाड़ी है, ऋषभ पंत भी उतने अच्छे खिलाड़ी है, या फिर सूर्य कुमार यादव भी, सब 4 पे 5 पे बैटिंग कर सकते हैं, बट आपको 3 डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके 4 5 6 कौन होंगे, और मुझे देखना है कि कितना देर तक आप उनको ट्राई करते हो बिना कोई बिना कोई पोक के। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली ये तभी बने हैं जब उनको एक लॉन्गर रन दिया गया। वो तो आईसीसी टूर्नामेंट में स्टार्ट हुआ था, सो उसके बाद उनको एक लॉन्गर रन मिला है, तभी उनको उन्होंने अच्छा किया है। सो आई लव टू सी इंडिया गिव फिक्सेटेड 4 5 6 एंड गिव देम अ लॉन्ग रन। और फॉर मी पर्सनली मेरा बहुत कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज है सबसे, एंड आई गेस इट विल बी it won't happen only, but still I want to see Shreyas Iyer, Surya Kumar Yadav and Rishabh Pant as the 4 5 6. I don't see KL Rahul in the middle order. whatever the stats may be, how much ever उसने उन्होंने अच्छा किया होगा, बट मैं उनको एक ओपनर की तरह देखता हूँ। और अगर शिखर धवन फिक्स है 2023 वर्ल्ड कप के लिए, तो आई डोंट सी केएल राहुल मेकिंग इट टू द 11 सैडली। और श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं, डोमिनेट करने का चांस है हमारे पास, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन में ओवरसीज, तो इंडिया में तो पक्का स्ट्रगल करेंगे अगर टर्न होने लगा बॉल, तो कोई भी बॉलिंग अटैक हो। So I really want to see Shreyas, Surya Kumar, and Rishabh in the middle order and give them a longer run. Okay, यहाँ very पे निकी की interesting थोड़ी सी take. फैंटेसी हो गई है, फैंटेसी वर्ल्ड में थोड़ी चले गए हैं। राहुल को वाइस कैप्टन बना के आप निकाल नहीं सकते, आई गेस वो थोड़ा। बट रौनक और मतलब यहाँ पे बीसीसीआई हाँ, तो बोलिए कुछ भी बोलिए। कर सकते हैं, नहीं, बीसीसीआई तो कर कुछ भी कर इतना सकते सकते अगर manipulative. अगर केएल राहुल को बाहर करना है तो फिर यू कैन मेक बुमराह एज वाइस कैप्टन एज वेल, तो वो तो ऑप्शन है ऑलरेडी हमारे पास। हैं। बट एंड आई कर अग्री पर्सनली सकते हैं, विद, बट आई कंप्लीटली अग्री yeah, विद yeah, टैक्टिकली व्हाट शायद ना निकी हो। सेड राइट नाउ एक्चुअली। मतलब अगर इफ दिस इज इन ओडीआई देन आई कंप्लीटली अग्री, बट आई फील दैट यू नो टी20 आई मीन ओडीआई के लिए ये अगर हो सकता है तो फिर सही बात है, बट टी20 में केएल राहुल हैज टू ओपन। आई मीन शिखर धवन के लिए जगह नहीं है टी20 में। आई फील ना ना, केएल राहुल के KL Rahul आउटस्टैंडिंग has स्टैट्स है, to. मतलब उसके टी20 में आउटस्टैंडिंग स्टैट्स है, ही विल बी ओपनिंग एंड आई सी सेम सिमिलर नंबर 4 5 6 Shreyas Iyer, Sky, and then or anyway, Sky at 4, Shreyas at 5, and Rishabh at 6. I actually don't agree with playing Rishabh at number 4 because he's you actually I think Nikhil has given enough explanation. I don't want to say the same thing. एग्जैक्टली मतलब अभी मतलब वी कैन कीप गोइंग अबाउट द मिडिल ऑर्डर थिंग बिकॉज ये तो प्रॉब्लम Yeah. लॉन्ग टर्म में है। मतलब इवन इफ वी टॉक अबाउट द टेस्ट सीरीज विल कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट मिडिल ऑर्डर ओनली। सो थोड़े से कमेंट्स पे आ जाते हैं, तो lots of comments that we missed, but there was one topic that was regularly mentioned about Bhuvaneshwar Kumar. तो कोई लोग कह रहे हैं कि I'm happy Bhuvaneshwar got dropped. So I think it was Abhinav. I'm not able to get the comment, but Abhinav said that yeah, I'm not able to get that comment. If anyone can get it, really, it would be great. But Abhinav ने बोला yeah, good to see that Bhuvi got dropped. But उसके लिए Shashank said I'm happy Bhuvi got back. So the news is that Bhuvaneshwar Kumar got dropped from one format. Yeah, the selectors opted to retain Bhuvi only in the T20s, and he was dropped in the ODIs. And Aves Khan is the replacement, is the player who got a call up in both the formats. So I want to talk about Bhuvaneshwar Kumariya. So रौनक, कमिंग टू यू, ऑब्वियसली दीपक चार ने जो इनिंग्स खेली लास्ट मैच में, ही ऑलमोस्ट नेल्ड हिज पोजीशन in the ODI squad at least. So do you think that it is difficult for Bhuvaneshwar Kumar to get back into the ODI squad? And this series, this like T20 series जो है against West Indies, it is going to be a do or die series for Bhuvaneshwar Kumar, just as Boy is saying. यस, एब्सोल्युटली, बायो बॉय के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भुवनेश्वर कुमार का ये प्रोबेबली आखिरी सीरीज हो सकता है। मेरे ख्याल से शायद स्टार्टिंग 11 में खिलाए भी ना, हो सकता है खिला ले, क्योंकि मतलब सीनियर प्लेयर हैं, और जैसा बिस्से का ट्रैक रहा है कि सीनियरिटी मिलनी चाहिए प्लेयर को, जो पहले से खेल रहे हैं उनको थोड़ा खिलाना चाहिए। हमने देखा है, बहुत डिस्कस किया टेस्ट में रहाने पुजारा का कि क्यों खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं। तो भुवनेश्वर को हो सकता है कि एक और मैच मिल जाए, बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि हर सीरीज को ना, अभी वर्ल्ड कप से पहले जो हमारा पिनेकल होता है क्रिकेट में, उससे पहले हर सीरीज को एक अलग फॉर्मेट में ट्रीट करना चाहिए कि हमको ये 2 रिजल्ट्स चाहिए इस सीरीज से, नॉट द रिजल्ट इन विन्स और लॉसेस। मैं सीरीज हार जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया सीरीज हार जाए, इंडिया मैचेस हार जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द एंड ऑफ द सीरीज आप पहले, स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज आप 2 क्वेश्चन पूछे कि आपको इस सीरीज से क्या चाहिए,
एंड ऑफ द सीरीज आपके पास वो दो क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। पहले स्टार्ट ऑफ द सीरीज में मान लीजिए, अगर आपके पास एग्जांपल देता हूँ, अगर क्वेश्चन पूछा आपने कि मेरे को नंबर 4 5 6 का सॉल्यूशन चाहिए, या फिर मेरे को बॉलिंग का सॉल्यूशन चाहिए, सीरीज के एंड में वो एक या दो प्लेयर का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो सीरीज आपकी फालतू गई, भले आप सीरीज 3-0 से जीत जाए। Interesting. मतलब अभी we are talking about Paytm Trophy. That is like our bigger than World Cup kind of a situation. So Paytm Trophy, I guess, is the official name for this India West Indies series. So finally, the Paytm Trophy is back, the best tournament in the world. So comments में Abhinav is saying one person who deserves a longer run is Harshal Patel. So yeah, I think he's not in the T20 squad. We'll be talking about the T20 squad in just a little bit, but let us now have a wrap up with the ODI squad of the India team. So we discussed the batters, we discussed the all-rounder position, we discussed the bowlers. So last topic पे आ जाते हैं ODI squad के. So we'll have a look at it again. Let us talk about Aves Khan here. So Aves Khan obviously into the mix finally in the Indian team. He was unlucky for a while जब injury हुई थी बीच में during the England series, but now finally he's amongst the mix. So Omkar, coming to you, Aves Khan, obviously he did well in the IPL. So are you happy seeing him amongst the Indian team? And do you think he's going to get enough games for India leading up to the big tournaments that is coming up ahead? लाइक जैसा आपने मेंशन किया कि उन्होंने आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लाइक इकोनॉमी भी अच्छी थी, डेथ में भी डालते थे और पावर में एक आध दो ओवर डाल के विकेट भी लेते थे. सो द थिंग विद आवेश खान इज दैट ही हैड अ ग्रेट डोमेस्टिक सीजन विद मध्य प्रदेश, एंड आईपीएल में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था. लाइक बिफोर 2021 आईपीएल में आवेश खान हमें इतने दिखे नहीं थे. इन 2020 वी डिडंट सी आवेश खान प्लेइंग for Delhi Capitals. In 2021, he was introduced in the team ahead of Umesh Yadav and Ishant Sharma, and probably he just grabbed those chances क्योंकि उनका डोमेस्टिक सीजन काफी अच्छा रहा था. तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसे प्लेयर्स ट्राई करने हैं तो आपको चांसेस तो बायलैटरल सीरीज में ही देने पड़ेंगे, जैसे कि सिराज है, आवेश खान है, फिर बाद में इवन प्रसिद्ध कृष्णा है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, ये प्लेयर्स तो मुझे फिक्स्ड लग रहे हैं काफी इसमें वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए. और इवन हर्षल पटेल, डेथ में हमें एक बॉलर चाहिए, तो शायद हर्षल पटेल को भी चांस लगे, और अगर उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया देन ही माइट आल्सो फिक्स हिज प्लेस. बट दीपक एंड शार्दुल हैव ऑलमोस्ट फिक्स देयर प्लेस, आई प्रोबेबली ड्यू टू द परफॉर्मेंसेस व्हिच दे हैड इन द आईपीएल एंड आल्सो इन द अदर बायलैटरल सीरीज. एग्जैक्टली एंड मतलब ओडीआई स्क्वाड के बारे में डिस्कशन चालू है रौनक सर, एंड कमेंट सेक्शन में वेरी इंटेलेक्चुअल कमेंट्स ऑलरेडी कमिंग इन अबाउट एंड आई वाज लुकिंग एट द 2023 वर्ल्ड कप इन हैंड. सो आई एम सो हैप्पी. मतलब ये माइंडसेट पूरा चेंज हो गया. प्रीवियसली वी नेवर यूज्ड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर वर्ल्ड कप. अरे 2019 और टाइम है, लेट्स जस्ट एंजॉय प्लेइंग द बायलैटरल सीरीज. बट नाउ वी एक्चुअली मतलब जो भी झटका लगा है 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, वी फाइनली गॉट टू नो कि व्हाट इट इज लाइक अबाउट planning a particular team. So really good that we already started on that prospect. So Abhinav is saying Harshal is going to be the big asset, and he doesn't know why is it not in the ODI squad. Hopefully we see Harshal Patel amongst the mix very soon. Jagan S is saying there is so much to learn. We started off really well. We could not get wickets in the middle. We'll look to see how we get wickets in the middle overs. Yeah, wickets in the middle overs is something we really need to work upon. Even the power play, I think our record since 2019 is not looking really good. And Abhyuday is saying that two things to take from Australia in the 90s. The Invincibles had a solid middle order and they invested in left arm pace. The Aussies that won 21 T20 World Cup lost so many T20 series, but they tested middle. सो दिस इज यही पॉइंट आता है कि मतलब बायलैटरल सीरीज, जैसे रौनक ने कहा, इवन इफ वी लूज द सीरीज इट्स ओके, बट हमारे जो क्वेश्चंस है दैट नीड्स टू बी आंसर्ड. सो इट्स अ गुड पॉइंट. मतलब लेफ्ट हैंडेड पेसर्स की कमी है इंडिया में. नटराजन आई थिंक अराउंड द स्क्वाड थे 2020 तक, बट गॉट इंजर्ड and sadly missed out. So it will be good if we can nurture some left-handed pacers. संचित अगर So anyways नहीं guys, मिले ODI तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट आर्म पेसर अगर नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट आर्म पेसर ही मिल रहे हैं. लेकिन उनको एक प्रोजेक्शन देना चाहिए कि आप जैसे आप बैट्समैन को तोलते हैं कि वो कितने रन बनाते हैं, तो विकेट टेकर्स को भी, जो बॉलर्स को भी, उनको कुछ ना कुछ आंकड़ों पे तोलना चाहिए कि हाँ विकेट्स ठीक है, लेकिन आपने बॉलिंग कैसे की, आपका जो टीम में काम है वो आपने सही से किया या नहीं किया. अगर आपको पहले 5 ओवर्स दिए गए हैं तो आपने प्रेशर बनाया कि नहीं बनाया, विकेट मिला नहीं मिला वो बाद का बात है, प्रेशर बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि प्रेशर अगर आप रिलीज कर देते हैं तो वो कोई फिर मतलब नहीं बनता है.
एक एंड से बुमराह अच्छी बॉलिंग करे, दूसरे एंड से भुवनेश्वर आके प्रेशर रिलीज कर दे रहे, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। पहले अगर आप स्टार्टिंग में देखें, जहीर खान होते थे, इरफान पठान होते थे, वो दोनों आते थे, प्रेशर दोनों साइड से क्रिएटेड रहता था, तो इसलिए जो है स्विंग से विकेट मिलता था। ये नहीं कि स्विंग किया तो विकेट मिल जाएगा, वो वैसा कोई सीन नहीं होता है। तो आपको यहाँ देखना होगा कि आप कैसे उस फॉर्मेट को आप वापस से रिवाइव करते हैं। मुझे याद है वो पाकिस्तान वाली सीरीज जो इंडिया ने खेली थी, जहाँ पे भुवी और कौन कौन थे, मोहम्मद शमी, ये दोनों ने पूरा एकदम उनके परकच्चे उड़ा दिए थे। तो उस तरह का एक वापस से जोड़ी चाहिए हमको, जो थोड़ा स्टार्टिंग में कर सके कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली मतलब ये लेफ्ट हैंडेड पेसर्स के बारे में अभी जो डिस्कशन हो रहा था, आई रियली लाइक दैट। सो हमने एक पोल डाला हुआ है इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। सो द क्वेश्चन इज दैट आर लेफ्ट हैंडेड पेसर्स अ नेसेसिटी for India in limited overs cricket? So we'll see what our audience think about it. Personally, I feel left-handed pacers should be there at least in the T20 team, because अभी हम T20 team के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं. So Shashank is saying Nattu Khalil come back. Maybe even Arshdeep Singh has a chance if he has a good IPL for Punjab again. Maybe he can be amongst the best. Good death bowler, and that is what really we require. Anyways, guys, ODI squad के बारे में डिस्कस कर ही लिए. We'll get back to the prediction at the end of the show. But now let us have a look at the T20 squad, because T20s is the need of the hour, because another T20 World Cup year. And जो हमने 2021 में T20 World Cup में देखे, we hope to forget all that and solve everything. So this is the T20I squad against West Indies. So nothing much has changed. Just Bhuvaneshwar Kumar has came back into the T20I squad. Rohit Sharma and KL Rahul, the captains and vice captain respectively. Ishan Kishan is also there, and it will be interesting to see what happens. Venkatesh Iyer, जिन्होंने ODI series में I think he didn't do well, and he got dropped in the ODI squad, but now retains his place in the T20 squad. So really some interesting selection choices here. So let us now dive down into the discussion. So Rishi, Nikhil, anyone of you can answer this. Yeah. Tell me about Venkatesh Iyer. Like, do you see him as a probable future? Matlab, even if, let's say, best case scenario, Hardik Pandya and Venkatesh Iyer both are fit, whom will you give opportunities to right now? Considering in mind that Hardik has not played international cricket for quite a long time, whom will you pick and give more opportunities to? If both are fit, then anytime Hardik Pandya will go because of the experience that he has. I mean, उसको है ना थोड़ा सा जो जो मेंटालिटी चाहिए, जो टेम्परामेंट चाहिए ना, उसके पास है, वो हार्दिक के पास है. I felt that Venkatesh was slightly casual on the field, whenever he was fielding or batting or even bowling as well. So he has to still be given some more time, I feel, until Hardik Pandya actually comes back. So unless and until he's given so much time, we won't be able to really judge on how Venkatesh Iyer can perform on the international stage, because we didn't judge Hardik Pandya on basis of 1 or 2 series. We have seen this over 2 or 3 years, that how Hardik Pandya has matured as a cricketer in international cricket, and that's how we are missing him from the past 1 year. That where is the replacement of what we are waiting for, like Hardik Pandya's replacement? Where is it? We don't have a replacement where we see. And then so that's the thing, that we have come up to a point that इतने सालों का जो इन्वेस्टमेंट था हार्दिक पांड्या के ऊपर, वी आर सीइंग द रिजल्ट ऑफ दैट राइट नाउ, कि वी वर बैकिंग ओनली हिम, we didn't produce anyone else as his backup, and abhi we are regretting the fact that he's injured and there's nobody else to fill those shoes. So I feel that is one point. So Venkatesh Iyer should be given more time. I felt it was really sad to see him being dropped only after just 2 games. So एंड वो भी एक गेम में बॉलिंग मिला, खाली 4 ओवर के बेसिस पे तुम लोग ने जज किया उसको, एंड जस्ट ड्रॉप्ड हिम ऑन बेसिस ऑफ जस्ट 4 overs. So I felt that was little sad from Venkatesh Iyer's perspective. एग्जैक्टली एंड जब हार्दिक पांडे और वेंकटेश अय्यर के बारे में डिस्कशन हो रहे थे, कमेंट सेक्शन में प्रतीशा मेड अ पॉइंट दैट वेंकटेश अय्यर इज मोर ऑफ अ टॉप ऑर्डर बैटर, एंड इफ वी रियली नीड अ फिनिशर इन द टीम देन वी शुड गो फॉर हार्दिक. सो रियली लॉजिकल पॉइंट्स. मतलब both are fit, then obviously Hardik will get a nod, but finishing की अगर हम बात करें, then there are lots of names already coming in. So शाहरुख खान के बारे में, sorry to interrupt you, but I never felt that Shivam Dube, even like Bioba is mentioning, Shivam Dube didn't do anything bad, at the international stage whenever he got chance. Yes, for Rajasthan Royals,
he had been little disappointing because of the, you may say that he was not told his role properly, or maybe he didn't perform well. But at international level, he did decently well to, at least retain his spot. But he wasn't, he wasn't backed. That's what I feel. ओके, ओमकार आप कुछ कहने वाले थे, आपने हैंड रेस किया था. Yeah, when there was a comment of yeah, Shah Rukh Khan as well. कि मतलब Shah Rukh Khan can be yes, can play the role of a finisher. But the thing is, मुझे खाली ये जानना था कि can Shah Rukh Khan be the sixth bowler? Because if we have numbers four, if we have a number 4, number 5, and number 6 with Shreyas, Surya, and Pant, we have to go with 5 bowlers, or we have to tell Shreyas you have to bowl 1 or 2 overs. If one or two bowlers get smashed for runs, so probably I think we should go with 6 bowlers. So I think any one of Shreyas or Surya should bat at number 4, Pant at number 5, then Jadeja at 6, and if Hardik is fit, then Hardik, or maybe Venkatesh Iyer, or maybe even Shardul can bat at number 7. Even Deepak Chahar is there. Okay, very interesting choices. मतलब yes, Deepak Chahar is also there, so we got lots of option, but वो बस balance लाने का question है, so hopefully we solve that out. So Bio Boy was also mentioning Rishi Dhawan. So Ronak, I want to ask you about Rishi Dhawan. So obviously he's been amongst the news ever since that brilliant campaign in the domestic season so far. But how important do you think it is for Indian selectors also to keep an eye on this domestic performers? I mean, obviously you can't keep all of them out for too long. So are you expecting something or the other from Rishi Dhawan? Because I think age-wise, he doesn't have too much to contribute. But if we want short-term success, maybe we can invest in Rishi Dhawan till the time Hardik actually sorts his fitness and entire thing out. संचित, मेरे को सरप्राइज नहीं हुआ कि अगले सीरीज में दीपक हुडा को ड्रॉप करके ऋषि धवन को ले आए. तो आई वोंट बी सरप्राइज बाय दैट डिसीजन ऑफ बीसीसीआई एज वेल, कि इनका ट्रेंड रहा है ऐसा, तो आई बिलीव वो भी होने ही वाला है. ऋषि धवन बस मौके का क्योंकि उनको जितने चांसेस मिले हैं अभी तक उसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है. कहीं ना कहीं वो एज फैक्टर बहुत मैटर करती है, और एज फैक्टर से क्या इम्पैक्ट होता है वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मेरे से ज़्यादा अच्छे से. संजू सैमसन, जयदेव उनादकट सब आपके ही करता धरता है, तो आपको अच्छे से दुख पता है क्या होता है. बट मेरा थोड़ा सा इसमें मानना है कि ऋषि धवन को मौका नहीं दिया. लेकिन आप क्या करेंगे? आप दूसरा ऑप्शन क्या देख रहे हैं? आप दीपक हुड्डा को ट्राई कर सकते हैं, कर लीजिए. आप शाहरुख खान को ट्राई कर सकते हैं, कर लीजिए. जो ये सीरीज आ रही है ना, उसमें 2-3 स्पॉट ऐसे हैं जहां पे आप प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं. आप ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन उनको मौका दीजिए कि बॉलिंग भी कर सके. ऐसे नहीं कि आप 5 बॉलर अच्छे करें तो छठे बॉल को आप खिला ही ना. ये थोड़ा सा गलती हो जाती है. मतलब टीम सिलेक्शन कर ली, प्लेइंग 11 बना ली, उसके बाद जो प्लेइंग 11 उतारी है उनके फुल पोटेंशियल को तो यूज कीजिए आप. तो कहीं ना कहीं वो गलती रही कि वेंकी अय्यर को जो है हमने बॉलिंग ही नहीं दी पूरे सीरीज. वो एक सवालिया निशान है, और वो सवाल जो है खटक रहा है मेरे को अभी भी. और अभी भी जो दीपक हुड्डा को लाए हैं टीम में, उनको एज एन ऑलराउंडर का अगर खिलाया तो क्या उनको बॉलिंग देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो देखना होगा सीरीज में. एग्जैक्टली मतलब वेंकटेश अय्यर की अगर हम बात कर रहे थे, शिवानी ने भी ये कहा कि उनको पूरे चांसेस मिलने चाहिए. सो स्पीकिंग अबाउट द T20 सीरीज, शी इज सेइंग दैट तीनों मैचेस खिलाने चाहिए. बट आई आल्सो एग्री विद दिस. बट आई वांट, अगर वेंकटेश अय्यर खेल रहे हैं देन तीनों मैचेस में उनको बॉलिंग भी किया जाना चाहिए. सो वी हैव टू टेस्ट दैट नंबर 6 रोल आउट. सो होपफुली दैट हैपेंस. Tejaswin यहाँ पे कह रहे T Natarajan will be crucial because he's a left arm pace bowler and he will be important too. So let us not forget the next World Cup is in Australia where यार फास्ट Natarajan had बॉलर a मत good. बोलो यार, दुख होता है यार. 120 की स्पीड से डालता है वो. But still, I mean, क्या कर? But he did well. He did well. मतलब even हाँ with his अच्छा क्या, speed. मैं एज ए बॉलर डाउट नहीं कर रहा, लेकिन जो लेफ्ट आर्म फास्ट देखने का है ना, उसमें उससे याद आता है मिचेल स्टार्क याद आता है, फिर वासिम अकरम, ये लोग याद आते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट से. लेफ्ट आर्म मीडियम लेफ्ट आर्म पेस, लेफ्ट मीडियम आर्म. फास्ट बोलते तो भी एक बार चल जाता. हाँ ओके, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, खुश कर दिया. बट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट नटराजन, बिकॉज ये जो है पॉइंट, इट इज लिंक्ड टू व्हाट अभ्युदय आस्क्ड इन द next comment. He's saying that Bumrah and Shami obviously are in for sure. So the whole debate is about the third pacer and one spinner in Jaddu, maybe 4 pacers, or you choose an all-rounder. So let us now address this selection dilemma. Any one of you can answer. मतलब obviously Bumrah and Shami तो है. थर्ड पेसर आपके हिसाब से कौन होगा?
And what will be your bowling combination overall? चलो ओमकार आपने hand raise किया था. Tell me your bowling Yeah. combination in the first match in Pakistan. Yeah, so the thing is, if you see शमी का ओडीआई में काफी अच्छे बॉलर है, बट T20 में थोड़ा सा मार खाते हैं. हमने देखा है T20 इंटरनेशनल्स एंड इवन द आईपीएल कि थोड़ा सा इकोनॉमी का उनका ऊपर नीचे रहता है. आई गेस 9 की इकोनॉमी रहती है. तो आई वुड लाइक टू सी शमी. मैं शमी को नहीं देखना चाहता एज अ फिक्स्ड पेसर, बिकॉज इफ अगर उनका फॉर्म ऐसा ही चलता रहा कि इकोनॉमी ऑफ 9.5, देन इट्स अ साइन ऑफ वरी फॉर अस, बिकॉज बुमराह अकेले डेथ में नहीं संभाल सकते. एंड it's not like Bumrah is a machine. He can do everything. अकेला बॉलर कुछ नहीं कर सकता. So probably I think Shami should fight for his place, because we have got Siraj as well. तो सिराज का पेस ज्यादा है एंड उसको बाउंस भी ज्यादा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में. तो आई फील कि probably we should see that Shami should be told that your economy is bit affecting your game, so you should focus on the economy. And there are other players as well, like Harshal Patel है. ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम्स बड़े होते हैं, तो स्लोअर बॉल कटर से मे बी ही कैन एग्जीक्यूट इट रियली वेल. हमने इसमें भी देखा था आईपीएल में. एंड सिराज है. देन वी हैव गॉट शार्दुल ठाकुर हु कैन बैट, एंड दीपक चहर भी है जो कि पावर प्ले में विकेट्स ले सकते हैं. इवन भुवनेश्वर कुमार को मैं फिलहाल ये कंसिडर करता हूँ, बिकॉज ही इज इन द T20 स्क्वाड. सो देयर आर लॉट्स ऑफ bowlers who can bowl, but we have to see that who can bowl with Bumrah at the death properly, because if we get Shami is being going for runs for a few times, so it's a dilemma. And for thing is, Deepen has mentioned that Natarajan can swing the ball in for right-handed batter and also bowls good Yorkers, but Natarajan का सीन ऐसा है कि थोड़े से इंजरी प्रोन रह गए. उनकी इंजरी काफी लंबी हो गई, उनको कोविड भी हो गया था आईपीएल 2021 में. सो इट्स अफेक्टिंग इट्स करियर, एंड प्रोबेबली इसकी वजह से उनका डोमेस्टिक सीजन भी इतना अच्छा नहीं रहा था. 4 ओवर में 39-43 ऐसे उनको रन्स पड़ रहे थे शेयर मुश्ताक में. सो ये इफ अगर उनका आईपीएल अच्छा जाता देन ही माइट बी कंसिडर, अदरवाइज आई डोंट सी हिज प्लेस, क्योंकि इंजरीज, लॉन्ग टर्म इंजरीज कैन डेफिनेटली blow your career. Exactly, and Tejaswin corrected himself, a medium fast bowler, because having a left arm medium fast bowler in Australia will be too good. Yes, we completely agree with that, and he has already made his mark in the last series that he played. So Natarajan is a goal for me. He's a goal for everyone. I mean, we hope to see him fit and fine for that नहीं Australia भाई, World मेरे Cup, लिए because जयदेव उनटकट गोल्ड है. yeah, Jaydev Unadkat, he's like a gold and god for us. But no disrespect, he's a wonderful human too also. So just trolls hote rehte hain, but still always love that man. Anyways, Pranav यहाँ पे कह रहे Washington Sundar is also back in the team. So obviously, Nikhil, coming to you about the spin bowling option. So I think Shivani ने ये कहा था कि Ashwin, is he injured or not? So to answer what Shivani asked, yeah. शिवानी ने कहा था कि अश्विन इंजर्ड है क्या. सो यस, अश्विन इज इंजर्ड अपेरेंटली एंड ही विल नॉट बी देयर, not be available for selection for about 1.5 months. So also the Sri Lanka series as well. So that is why Washington Sundar might be as a starting option for Team India in this T20 series. So Nikhil, coming to you, Washington Sundar, do you see him making a mark? Because we really need him to fire for that Australia World Cup, because he is going to be a really important bowler for us according to me. First of all, I feel 2017 all over again, where Ashwin was rested and never got back, or never found his way back for 2 to 3 years. But I hope he is doing well, and he comes back as fast as possible. Coming to, but yes, obviously it's BCCI, so the nature of the injury, or the what injury has happened, has not been mentioned. Exactly what Shivani is saying here. Typical BCCI. So that is like that's very expected from BCCI. If BCCI don't do that, then they're not BCCI. So yeah, coming back to Washington Sundar, I guess that position becomes really crucial, because when there is no Jadeja, then the ODIs and in the T20s we really miss him, because a guy who can bowl it at that economy and score a lot of runs with a good strike rate. He's almost like gold. So everyone was saying Natarajan and Jaydev Unadkat. I guess Ravindra Jadeja is the gold for me. Washington Sundar's place in the T20 World Cup, I'm not quite sure, because I guess India will just go with one spin bowling all-rounder, which everyone knows who is going to be.
if fit and available, is going to be Jadeja. So Washington Sundar can really be a crucial backup for him, because when eventually after some time Ashwin will go, Jadeja will go, so then you have to create substantial backups in order to replace people who can churn out performances as these guys used to. So he has been really good, and I really want to see if he is playing in the 11. I really want to see him in the power play, because that's what got him up to the ranks. I haven't seen him bowl in the power play for quite a while. I've even India has given Yuzvendra Chahal the ball in the power play, but he hasn't been given. Washington Sundar hasn't been given the ball. So I guess that responsibility really suited him, and he's made for those kind of situations. So he'll be really crucial in replacing Jadeja in this, and I guess in the Sri Lanka series as well. But as far as World Cup is concerned, I don't think he'll make it to the 11. Maybe he can make it to the 15 if Ashwin's injury continues. या एग्जैक्टली मतलब अब वॉशिंगटन सुंदर के बारे में बहुत अच्छे पॉइंट्स कहा निखिल ने. तो एज यू मेंशन पावर प्ले में विल बी क्रूशियल बिकॉज प्रतीशा ने भी ये भी कहा है कि वेरी इकोनॉमिकल इन पावर प्ले. दैट इज द नीड ऑफ द आवर फॉर इंडिया. इकोनॉमिकल चाहिए पावर प्ले में. इवन इफ विकेट्स ना आए, एक एंड से अगर शांत रखे, देन he will do wonder, just like what Ashwin used to do when he was all in his prime. मतलब comment section में अगर अश्विन के बारे में topics comments देखे, so it really makes you think कि what a downfall it has been for Ravi Ashwin in limited overs cricket. Very sad to see. I mean, Bio Boy ये कह रहे कि only performed against Scotland, Namibia, against New Zealand at home condition, and made us believe he's still worthy in white ball. एंड अभिनव ने भी ऑल्सो ये कहा कि मेरे फादर जो इतना क्रिकेट नहीं देखते, वो भी पूछे इस दिन अश्विन अभी भी है व्हाइट बॉल में. या ओमकार, यू वर गोना से समथिंग अबाउट अश्विन. आई थिंक ये अश्विन का जो है ना, आई थिंक पीपल आर ट्रीटिंग हिम बिट, मतलब थोड़ा सा हार्श लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज द थिंग इज दैट इफ रवि अश्विन वाज नॉट बीन ड्रॉप फ्रॉम 2017, तो शायद हमें जडेजा अश्विन का डुओ हमें वर्ल्ड कप 2019 में देखने मिलता. एंड मे बी अश्विन कैन बैट तो थोड़ा और डेप्थ रहता है बैटिंग, बिकॉज वी हैव सीन कुलचा को उतनी बैटिंग आती नहीं है. दे डोंट सर्वाइव मच when they are onto the bat. Like अगर 8 विकेट गिरे तो कुलचा can't score runs like we have seen with what Ashwin does if he can rotate the strike. But the thing is that he's a very smart bowler, and we saw it in the India-New Zealand T20 series. So maybe Washington Sundar was injured, and that's why it was the decision to bring in Ravi Ashwin. So अगर आपने उनको पहले 2 मैच में नहीं खिलाया, where it was very much crucial because you played Varun Chakravarti in the New Zealand match and the Pakistan match. So अगर उसने परफॉर्म किया अगेंस्ट द रिमेनिंग मैचेस, सो इट्स नॉट हार्श. Okay, very interesting because about that Kulcha topic, even I would like to chip in. I think it was a good move to bring in Kulcha at that point because, yes, no disrespect to Jadeja and Ashwin, but I felt that we really needed that attacking option in our spin bowling, and that really worked well for 2018 till 2019 until that game against England just before the World Cup 2018 में second ODI था जहाँ पे कुलदीप actually lost his confidence, and ever since then he could not ball his way, मतलब consistently could not ball his way into the Indian side. I think that is where we really broke apart. But yeah, maybe Ashwin के बारे में the criticism are highly justified about this. So Abhyuday is mentioning about Chetan Sharma's gem. First traumatized my father's generation with a 6 from Myanmar, and second traumatized my generation by ousting Kohli, Aro, and Dravid got a save us. Okay, मतलब yeah, it's very disappointing to see what has happened, and really मतलब जो भी हो रहा है BCCI के साथ, I hope it doesn't extend to a point कि मतलब World Cup के पहले भी we are still discussing about what is happening. Well, the thing of Miyadad 6 is, sorry to interrupt you, Sanchit. The thing of the 6 which Miyadad hit to Chetan Sharma, that was also, the match was also in UAE. So you can see the chronology. In 85, he was being smashed for a 6 in UAE, and in 2021, we got eliminated. He was a selector in the UAE itself for that ICC event. Okay, ओमकार स्टैट्स मैन बन रहा है अभी ट्विटर. नहीं तो ओमकार कहना क्या चाहता है भाई कि हम लोग अब नक्षत्र देख के सिलेक्शन करें? इतने खराब नहीं है. There are so much numerologies happening around us. ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
बॉय मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू रौनक, ये कह रहे हैं कोई कि नहीं वी कोई डोंट नहीं। नीड एन ऑलराउंडर इन T20 who can hit 30 or 15, but we should get some all-rounders who can make your team win in 30 needed or from 20 with 7 or 8 wickets down. I'm not sure what exactly is the exact role of it. If anyone, Maybe Ronak, he's आपको trying to identifying it, like probably like how Australia or New Zealand has, or even England, like Pat Cummins, Stark, Ashton Agar play at that time, and in the lower middle or in the tail, basically and they batting with try the to, tail. yeah. Okay. Fair enough. That's a good point. But I think we need both of them because दोनों जगह पे we are really looking bad. Maybe Yeah, he's Ronak, saying आप that कुछ कह रहे थे. someone who can actually handle the team with a good temperament. I feel because those 20 or Yeah. 20 I mean those 30 runs of 20 balls with 7 or 8 wickets down is very tricky situation. मतलब उस टाइम अगर आप मारने जाओगे और आप आउट हो जाओगे तो फिर टीम पूरी मतलब कोलैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा. But if you handle it with a good care, then maybe there's a chance that you will get your win past the score. This is what I think he's trying to say. रौनक आप कुछ कह रहे थे तभी. No, I guess Omkar covered that point, but let's move on. I guess with the comments, maybe we can do that. Yeah, yeah. But Pranav प्रणव यहाँ पे क्या प्रणव बोल रहे हैं? भुवी Yeah, को I want फिर to answer this one. क्यों खिलाते हैं? Yeah, निखिल, you can answer. Pranav, I guess, okay, I understand that Deepak didn't get his share of opportunity, but I guess you missed the England series at home where Bhuvaneshwar Kumar was bowling at his damn best. At Yeah. his, where we have seen Bhuvaneshwar Kumar in 2012, 2013, he was bowling at that kind of line length and swing seam. So I guess it's very, very tough on him to be judged so much and to be yes, he hasn't performed well, hasn't performed up to the mark, but straight away you cannot disrespect और आप इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि उसका जगह ही क्यों है 11 में. 11 में ही हैज प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन क्यों वो बिलोंग करते हैं उस 11 में. और वो ऐसे स्विंग बॉलर है जो आप हमको टॉप में विकेट्स देते. सो आई गेस दैट इज व्हाई ही इज इन द टीम. और अगर आप मिस कर गए हो इंग्लैंड सीरीज तो प्लीज देख लेना, हॉटस्टार पे हाइलाइट्स है. बट निखिल Yeah, बात यहाँ Hotstar पे ये आ promo. जाती है ना कि वो विकेट्स देते थे, इंग्लैंड सीरीज में दिया, बट इकोनॉमी अच्छी थी, विकेट्स लिए उन्होंने, मानता हूँ मैं बात. लेकिन जब हम बैट्समैन के लिए वो सेम चीज बोल रहे हैं, हम लोग काफी क्रिटिसाइज उनको कर रहे हैं कि नंबर 4 5 6 पे कोई अच्छा नहीं कर पा रहा, अपनी पोजीशन में स्टिच नहीं कर पा रहा, तो भुवी को भी मौके काफी मिले हैं, उन्होंने अपने मौके को बुनाया नहीं है. आफ्टर और दूसरी बात ये भी जाती है कि इंडियन टीम को अभी एक ऐसा कॉन्सिस्टेंट बॉलर चाहिए जो इंजरी फ्री रहे. भुवनेश्वर कुमार इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा है और वो एक फैक्टर होना चाहिए टीम सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप हर दूसरे मैच में इंजर होकर बाहर बैठ जाएं तो टीम की एक स्टेबिलिटी बर्बाद होती है. जो आपने मान लीजिए 3 सीरीज में अच्छा भुवनेश्वर कुमार ने कर दिया, मान लीजिए ये वेस्ट इंडीज सीरीज भुवनेश्वर कुमार खेल रहे हैं और काफी अच्छा किया, वापस प्राइम में आ गए. मेरे लिए भुवनेश्वर कुमार इन हिज प्राइम वाज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, ahead of Bumrah as well. But in not when he is not in his prime and when he is struggling bad time, तो आई बिलीव कि किसी और को मौका मिलना चाहिए. और वो एक मौका, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं किसी एक प्लेयर के ऊपर फॉर 3 4 सीरीज और वो एंड टाइम पे जाके इंजरी होके बैठ जाए, आई बिलीव कोई प्लेयर इंजर होना नहीं चाहता, बट अगर कोई बैठ जाए इंजरी होके तो दैट इज नॉट द पॉइंट विच वी आर मेकिंग ट्राइंग टू मेक. बिकॉज वर्ल्ड कप के पहले मान लीजिए एक सीरीज में वापस इंजरी हो गए तो पूरा मेहनत बर्बाद चल जाएगा, फिर आपको एक नए प्लेयर को लाके वहां पे बिठाना पड़ेगा फालतू का. तो वो एक प्रोस्पेक्ट देखना होगा और वो माइंडसेट से सोचना होगा कि कौन प्लेयर मुझे अगले 1 साल तक प्रोबेबल इंजरी ना दे लगातार खेलने के बाद भी. नहीं, Exactly. इंजरी And का पॉइंट है, एग्री. इंजरी अब्दुल्ला प्रोन ने का यहाँ पे ये पॉइंट भी है, कहा एग्री, है. बट हाँ, गो ऑन या संजय. निखिल आप कुछ. नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि आई थिंक अब्दुल्ला यहाँ पे बोल रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर इज द बेस्ट चॉइस हु इज नॉट एन इंजरी प्रोन एंड इज नॉट. लॉन्ग टर्म. सो रौनक का क्वेश्चन अगर आंसर करना है तो आई थिंक शार्दुल ठाकुर इज समथिंग हु कैन रियली बी ट्राइड आउट. मे बी that would be a good thing because I don't think शार्दुल उतने इंजर भी होते हैं. So maybe it's like a good option. But वही बात आती है इकोनॉमी की. He tends to go for runs and may not be that much trustable. Anyways, we are only like 6 minutes away from wrapping up, so थोड़े से comments देख लेते हैं and then we'll do the prediction bit.
Bio Boy कह रहे Saini and Umran Malik got extreme pace and would work in Australian pitches. Yes, बात तो सही की है, but यही बात आती है कि when you have just pace and discipline ना हो, then you tend to be a little bit on the disadvantage side. तो हमने ये बहुत बार देखा है. वरुण एरन एंड उमेश यादव in their younger days they used to tour to Australia, South Africa, but used to go for runs as well. So if Saini can manage to pull back with his ओमकार आप कुछ कह रहे हैं. Yeah, अगर if you ये जो comment है बायो बॉय का, the thing is कि उमरान मलिक has bowled in just 2 matches of IPL, मतलब 2 मैचेस में हमने उनको देखा है. So it's too young to say that उमरान मलिक सिर्फ पेस की वजह से शायद ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर पाए. The thing with Saini is कि अगर आपने किसी ने नोटिस किया रहेगा, then 2019 to 2020 pre-COVID, the 3-4 months Saini ने काफी अच्छी bowling करी थी. Like the economy of Saini in T20I was around 6 or 7. So that's good for a bowler. But the thing is that after he got injured and थोड़ा सा उनका line and length probably थोड़ा up and down हो गया, and even in the IPL उनको consistent run नहीं मिला, because the thing was in 2020 IPL Siraj was very much in the zone with his bowling, and we saw that even in the 2021 IPL तो सैनी को long run नहीं मिला. If he gets a long run in this IPL, like maybe playing for another franchisee, or maybe if he goes to RCB itself and they don't get Harshal Patel, so we might see Saini and Siraj again. So that's the thing, that if the bowler with extreme paces have to stick to the line length, that is the disciplined bowling, as you mentioned, Sanchit, and probably अगर उनको अच्छा लॉन्ग रन मिलता है, एक अच्छा प्रॉपर टूर्नामेंट खेलने होता है, then he can make a comeback and he might be more confident as well. More confident, मतलब ये सैनी के बारे में some good points about economical. I think जैसे प्रतीशा ने कहा, injury has indeed ruined Saini's career. We hope to see him performing really well. And about Siraj also, really good point, because in my team I would definitely have Siraj in that flight to Australia, because I really love that player, and I believe he has it in him to become an all format player for Team India very soon. Anyways guys, जैसे 4 minutes बस बाकी है, we'll have a look at the comments that we may have missed, and क्विकली हम आंसर करेंगे बिफोर यू मूव टू द प्रेडिक्शन एस्पेक्ट. तो अभ्युदय ने कहा कि व्हाई कांट रोहित एंड विराट बॉल मोर, they can spend time in the nets along with Shreyas if he plays. Virat got a wicket in that semi-final. These guys really need to spend time bowling. I mean, it has a good point to it. मतलब when your top order knows how to bowl, मतलब फिर से हम बात करते हैं previous generations of Indian team, you used to have a bowler in your top order. हमेशा रहते थे, गांगुली थे, बाद में रैना भी थे, सचिन, and Sehwag was also bowling. So it is always a good asset, but I'm not sure whether they will be bowling in Australia. Maybe India में होता तो शायद कर देते. शिवानी कह रहे इस सीरीज में किसी को भी चांस मिले, आईपीएल के बाद कुछ नए प्लेयर आएंगे और कुछ ड्रॉप होंगे. सैडली यस, जैसे आई थिंक किसी ने तो कहा था कि he wouldn't be surprised if हुडा gets dropped after this and कोई नया आ जाए. तो that has always been the case. आईपीएल की वजह से कोई आता है जाता है, but that's nothing we can do. Hopefully it works in our favor. Abdullah had said hey yo, like after a long time Abdullah came in. So hopefully you are enjoying Abdullah in Pakistan, because आज से PSL भी चालू हुआ है. Multan Sultans are cruising towards their first win against Karachi Kings. So hopefully all is well over there as well. तो अंकित ने भी कहा कि प्रमोशन हो रहा था हॉटस्टार का. आई थिंक रौनक सर कर रहे, निखिल सर कर रहे थे. यस, निखिल सर हॉटस्टार के बारे में कुछ कह रहे थे, बट रौनक वाज विद हिज सीरियस फेस बिकॉज ऑफ हिज रैंट ऑफ स्टार स्पोर्ट्स अ फ्यू मंथ्स अगो. तो इसीलिए आज रौनक थोड़े शांत है. एनीवेज गाइस, बहुत से कमेंट्स हो गए थे. Pakistan will play PSL in Aus before T20 World Cup, but India played in UAE a week before World Cup. Okay, it's like a sarcastic comment. Okay, मुझे लगा कि सच में खेल रहे वो लोग ऑस्ट्रेलिया में. Anyways, let us do our prediction bit for the T20s and the ODI. Starting with, मतलब दोनों का एक साथ कर लेते हैं. तो starting with you, Nikhil. Obviously, ODI series सबसे पहले. What do you think the score line is going to be, and who do you think will be the player of the series? यार मुश्किल क्वेश्चन पूछ ले यार. आई गेस मैंने ओडीआई प्रीव्यू किया था पिछले बार, और 3-0 2-1 ऐसे प्रेडिक्शंस जा रहे थे, और जैसा सीरीज गया है, बट आई विल से 2-1 बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. और प्लेयर ऑफ द सीरीज थोड़ा सा फारफेच्ड है, पर अगर उनको 3 मैच में चांस मिले तो आई वुड लव टू सी सूर्य कुमार यादव इन देयर एंड प्ले हिज बेस्ट, क्योंकि वो जब बैटिंग करने आते हैं ना,
ऐसा लगता है कि पिच बदल गया है, कोई तो फ्लैट विकेट ला दिया है, बॉल टर्न भी हो रहा है तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. सो आई वुड रियली लव टू सी हिम परफॉर्म इन दैट ओडीआई सीरीज. एंड ऑल्सो अगर T20 सीरीज की भी बात करें, सिंस दोनों का एक साथ ले लेते हैं, शिवानी जैसे कह रहे 3-0, आई थिंक शी मेंट ODIs, बट निखिल, कमिंग टू यू, T20 सीरीज स्कोर लाइन एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज. Again, T20 series 2-1. I would like to see KL Rahul as the player of the series for the T20 international because उन्होंने बहुत अच्छा किया है एज एन ओपनर पिछले कुछ समय से. और अच्छा लगेगा अगर वो वैसा ही फॉर्म कंटिन्यू करे. थोड़ा सा डिप रहा है फॉर्म में ओडीआईज में ओपनिंग में, बट अच्छा लगेगा अगर वो उस फ्रीडम से बैटिंग कर सके क्योंकि अभी तो कप्तान भी नहीं है. तो अगर उनको वो फ्रीडम दी जाए तो ही कैन बी द बेस्ट बैटर like on that particular day. He can overshadow anyone and everyone, even Rohit Sharma. वेरी इंटरेस्टिंग एंड बोल्ड स्टेटमेंट. प्रणव का एक कमेंट आई थिंक मिस हुआ था, तो बोल रहे कि अब से दो फेवरेट टीम है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड वहाँ बुरा है, इसलिए इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है. मेन फॉर फेवरेट्स तो हमेशा रहते हैं प्रणव भाई, बट क्या करें, ऑन द फील्ड वी ऑलवेज ये मौका वर्ड फिलहाल के लिए निकाल दीजिए. आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड, वी आर 5-1, 12-1 in World We Cups. don't speak about what happened. We don't speak about the Yeah. T20 World Cup which happened. Abhi But the thing directly is, he's saying those- that India and Australia are the favorites in T20 World Cup. I don't see that because, yeah, we can be the favorites, but there is England as well. England in T20s is a beast. They attack from ball one, and they might also have Archer at that time. Yeah, maybe yes. But coming to you, Rishi, about this series, like वर्ल्ड कप के बारे में थोड़े दिन के बाद हम बात कर लेंगे. अभी तो फिलहाल हंसना है हमें, पेटीएम ट्रॉफी है, द बेस्ट ट्रॉफी इन द वर्ल्ड. तो कमिंग टू यू ऋषि, योर प्रेडिक्शन फॉर द ODI and T20 series along with the player of the match series. Sorry. Yeah, ODI series, I would say, it probably should be 3-0 towards India. And I would go with Rohit Sharma to be player of the series. And T20, I feel there'll be a very tough competition for India because, West Indies has always been a, very competitive T20 side. So, and doesn't matter who is playing in their squad, they're always competitive in T20. So I feel that 2-1 over there, India will win. And I'm backing Virat Kohli for to be the player of the series in that series, T20 series. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब्दुल्ला ने भी कहा कि ओडीआई में उनका प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट 100 मारेगा. ओके, सो होपफुली इट हैपन. मतलब हम तो बहुत मतलब We are all टायर्ड हो sitting. गए बोली मत, about. तू तो Yeah, बोली we are all मत, तू तो sitting बोली with. मत. मैं तो होप से छोड़ दिया सच्ची. आज मैं हाँ, क्रिकेट हम लोग 22 तो खेल रहा था, उसमें कोहली ने 100 मारा, मैं खुश हो गया. बट कमिंग टू यू ओमकार, योर प्रेडिक्शन ODI एंड T20 सीरीज के बारे में. Well, I'll start with ODIs. ODIs में मुझे स्क्वाड को देख के वेस्ट इंडीज के ऐसा लगता है कि we might have an edge, so probably 3-0 because हमारे पास we have the bowling थोड़ा सा हमारे weak है, but Indian home conditions है, bowlers will deliver. And for me the player of the series in the ODIs will be Rohit Sharma, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी काफी टाइम से 100 नहीं मारा है. So I would love to see the big daddy hundreds from Rohit Sharma in the ODI series. And for T20, I'll like to say 2-1. We don't know what is 100. Fine. For 2-1 because in T20s, the right now which T20 series is going on with England and West Indies, it's a roller coaster, right? West Indies have a few young players who are performing really well, and they can be the potentials in the T20 World Cup as well. So 2-1 in favor of India, but I'll choose a man of the player of the series from West Indies. I like to say probably Kyron Pollard or Odin Smith. ओके, सो वेस्ट इंडीज के फर्स्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज आए. सो पोलार्ड आई थिंक बिकॉज ऑफ मुंबई इंडियंस कनेक्शन ऑब्वियसली, बट And बाय Rohit हिटमैन because of फिफ्थ. someone condition. या वो पता था. पहले टीम इंडिया आता है, फिर आईपीएल आता है. देखिए, कभी भी मैं इंडियन फैन आता हूँ, आपने मेरा नाम भी देखा रहेगा. यार ऋषि, आप कुछ कह रहे थे हैंड रेस. या आई जस्ट वांट टू से, मतलब मुझे बस एक चीज कहनी है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि ये जो स्क्वाड है ना, मतलब इवन उनका जो सेट राइट नाउ कि जो अपना जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है. बट आई थिंक दैट दिस इज द राइट मोमेंट एंड वी आर प्लेइंग इन इंडियन कंडीशंस. आई मीन होम कंडीशंस से और क्या मिल सकता है अच्छा आपको, कि आपको होम कंडीशंस मिल रहे हैं, आपको आप ऑलरेडी खेल चुके हो इन कंडीशंस पे, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट दीस कंडीशंस आर गोइंग टू ऑफर यू.
तो उसके हिसाब से you can just capitalize on anything, and it's not the end of your career that this series is do or die. ऐसा नहीं है कि ये सीरीज में अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट सीरीज नहीं मिलेगी. नेक्स्ट सीरीज भी इंडिया में ही है, श्रीलंका के अगेंस्ट है, आपको उसमें भी चांस मिल सकता है. तो एंड यू हैव अ गुड चांस टू आई मीन जैसे दीपक चार ने अभी इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करके ही हैज डन वेल विद द बैट, तो उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा बॉलिंग के साथ भी. तो ही विल डू वेल. भुवनेश्वर ऑलरेडी है इन T20 में, तो he can also be those guys who can share their experience. मतलब तो वैसा आई एम नॉट फीलिंग कि वीक लाइनअप है. यस, इनएक्सपीरियंस है, बट आई डोंट थिंक इट इज वीक लाइनअप, क्योंकि इंडियन बॉलिंग हैज ऑलवेज never failed to impress anyone in any given conditions. So Indian conditions में तो they shouldn't fail, I feel. Yeah, hope मतलब we will be the favorites in this series obviously, but Yeah. Abdullah यहाँ पे about mentioning about the Pakistan India game. So yes, I think that is going to be a very interesting game. And BBL में there are lots of players who are performing, who are playing for Pakistan, Hasnain and Raw bowling rockets. So it will be a very feisty contest, and that match is I think going to decide कि मतलब who will be the second team going through, because I think South Africa will be the second team as well. And yes, suspected for his bowling action, by the way. Okay, so we'll see what happens when the World Cup comes, but we still got a long way to go. But so unfortunately, we can talk about World Cup all we want, but फिलहाल तो time up हुआ है, so we'll have to wrap up on this West Indies series topic. But Ronak, your word on the prediction aspect, ODI and T20 is your pick for the player of the series as well. या अब्दुल्ला भाई बहुत सही कह रहे हैं कि इस बार पहली बार पाकिस्तान फेवरेट्स होगी T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया. दैट इज दैट. बट एज फार एज ओडीआई वेस्ट इंडीज सीरीज इज कंसर्न, तो ओडीआईज में आई बिलीव इंडिया इज अ बिट सुपीरियर देन वेस्ट इंडीज इन ओडीआई फॉर्मेट. तो वहाँ पे आई वुड लाइक टू बैक वेस्ट इंडिया 3-0 बिकॉज ऑफ जस्ट द कंडीशंस. और अहमदाबाद में खेल रहे स्पिनिंग फ्रेंडली पिचेस होने वाली हैं आई बिलीव. जो हमने देखा है मोटेरा में नॉर्मली रहता है, तो वहाँ पे हमारे स्पिनर संभाल लेंगे. बट और मैन ऑफ द सीरीज की बात करूँ तो आई बिलीव विराट कोहली विल बी द पर्सन फॉर मी एज वेल, कि वो एक अच्छा इनिंग्स खेलेंगे एंड probably कुछ आए, but I would not say what I. Secondly, in T20I series, I believe West Indies is a beast in T20I formats, and especially before IPL, तब तो वो अलग ही beast mode में रहते हैं, वो भी ऑक्शन से जस्ट पहले. तो I believe West Indies will blank us 3-0 or 2-1 in T20Is, and they are winning the T20 series for sure. I believe that. और उसमें मैन ऑफ द सीरीज जो है, आई बिलीव भले ही वेस्ट इंडीज जीत जाए, बट जस्ट बिकॉज कोलकाता है, ईडन गार्डन्स है, वेस्ट इंडीज है, देयर इज वन पर्सन हु रिलेट्स टू ऑल दैट थिंग, रोहित शर्मा. अगर वो वहां मैन ऑफ द सीरीज ना लेके जाए तो फिर वेस्ट इंडीज कोलकाता आएंगे, हम स्वागत करेंगे उनका. प्रतीक्षा यहाँ पे कह रही है स्टॉप जिंक्सिंग. हम ये सब रौनक ने नहीं, टेक्निकली संचित ने कमेंट नहीं किया. yes. नहीं, टेक्निकली शी वाज मीनिंग अबाउट रौनक अच्छी इनिंग्स खेलेंगे, उन्होंने वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया. तो अच्छी इनिंग्स इट कैन बी एनीथिंग. हाफ सेंचुरी भी चलेगा, बस बंदे को खेलने दो. आई वुड से जस्ट बट या होपफुली मतलब जो चाहिए वो हो जाए. तो आई विल नॉट डू माय प्रेडिक्शन बिकॉज लास्ट टाइम क्या था, बहुत रॉन्ग गया था. रौनक, आई थिंक इवन योर प्रेडिक्शन वेंट रॉन्ग, बट यू आर लाइक दैट, यू ऑलवेज गेट अवे फ्रॉम मतलब ऐसे योर प्रेडिक्शन का मेरा फेलियर. मतलब कभी हमेशा कभी मैं होता है ना भाई, मेरा कभी कभी होता है ना. यू सिंगल हैंडेडली डू समथिंग लाइक दैट. वर्ल्ड कप याद होगा तेरे को. But this series doesn't matter, so it's okay if I give my prediction. वैसे भी क्या फर्क पड़ता है. So I'll just give my prediction. तो ODI series I think I agree with Ronak. 3-0 तो नहीं होगा, I think 2-1 होगा. तो 2-1 to India. About the player of the series, I think it's gonna be Rohit Sharma, because obviously Rohit Sharma का अगर record देखे, whenever he comes back after an injury, especially in the ODI format, he always does well. I think 264 जब उन्होंने मारे थे इंजुरी के बाद ही आके मारे थे. So he'll love to play in the ODI format. So Rohit Sharma will be my player of the series. And T20s की अगर हम बात करें, I agree with Ronak again. West Indies are winning the T20 series 2-1, not 3-0. I hope not 3-0, but 2-1 West Indies जीतेंगे. It will be a
tight contest, but West Indies will be too good. I'm not sure about the player of the series because 11 के 11 लोग, वो लोग कोई भी आके मैच जिता देता है, तो it doesn't make sense. But इसीलिए the मैंने same उनके mega साइड से auction नहीं का बोला, सब मारेंगे उसके साइड से, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला उस साइड से. exactly. So I wouldn't be too disappointed with the series result as long as we identify our root causes to the problem along with the potential solution. So, anyways, that's all we had on the show. Thanks, Rishi. Thanks, Nikhil, Omkar, and Ronak for being on the panel. Thanks, everyone who tuned in the comment section as well. Abhyuday, Shivani, Abdullah, who also joined after a long time, Pratisha, and Pranav was also there. Big Boy, who I think was first time on his channel. So, if you haven't subscribed to our channel, do subscribe, I mean, and share this video, like and share this video with all your friends as well. Really would love to have your support. Deepen was also there. So everyone who joined in the comments, thanks again. So we'll be coming live soon, live very soon, maybe during this weekend, because since we know that mega auction just arrived, so we'll be starting off with something special regarding the IPL mega auction. So we'll be doing some special team preview before the mega auction of each team. So do join us and do stay tuned to our social media accounts. So we'll be posting an update whenever we have that हार्दिक भाई बोल finalized रहे and आज ready. पूरी मंडली आई है भाई, आई भी और चली भी जाएगी, आप बहुत लेट हो गए भाई. आप बहुत लेट हो गए, बट डोंट वरी, यू कैन जस्ट वॉच इट फ्रॉम द स्टार्ट अगर आपको टाइम है तो. हमें तो बहुत पसंद आएगा अगर आप वीडियो देखोगे. सो हार्दिक, वेरी सॉरी, बट good to see you also in the comment section. Anyways, guys, it was great talking with you. So we'll be connecting very soon during the weekend, but till then I hope you all have a safe and a very happy weekday and also weekend if we don't meet. So really enjoyed hosting you guys. This is Sanchit Desai, your host, signing off for today. Take care, everyone.